Hello everyone. Today I am going to discuss about an important plant pathogenic fungus, Cercospora. This fungus causes infection in variety of economically important plants, and there is only one species of the Cercospora known as the Cercospora api, which is a human pathogen, and it causes several lesions on the face. This fungus mainly belongs to phylum Ascomycota, class Dothidiomycetes, order Capnodiales, and family Mycosphaeraceae. Formerly, this fungus was placed in the Deuteromycotina, but because its perfect stage or sexual stage was not reported at that time, but after the report of its perfect stage or sexual stage, this fungus is now placed in the phylum Ascomycota, or you may say Ascomycotina. So now what are the symptoms of the this fungus Cercospora? As I told you, this fungus infects a variety of crops like tobacco, Arachis hypogaea, or which is commonly known as a groundnut, and other economically important crops. So, what are the symptoms of this fungus on the host? Here you can see in the early and leaf spot. Let me show you. Here you can see the early and leaf spot symptom on the groundnut leaves. So in most of the crops, the first visible symptom of the infection is the development of pale green areas on the upper surface of the leaf. Pale green, or you may say pale yellow color of areas developed. After that, brown colored lesions develop. ये शुरू शुरू में पत्तियों पे ये मेनली इनका इन्फेक्शन पत्तियों पे अपीयर होता है और ये कैसा इन्फेक्शन होता है ये बिल्कुल हल्के पीले रंग के हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर बहुत से ब्राउन कलर के लीजन्स ऐसे स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट है जिसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस early and late leaf spot symptoms. So the major symptom of the infection is the development of the pale yellow area and the development of the brown necrotic lesions, and in the case of severe infection entire leaves drop down. And besides leaf, this virus also infects the petioles and branches of the crop. Here you can see the brown spot on the stem as well. Now what is the वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या इसका माइसीलियम इस फंगस का कैसा होता है? तो ये जो फंगस है इसका माइसीलियम ब्रांच्ड इंटरसेलुलर और सेप्टेट होता है. ब्रांच और किसी किसी स्पीसीज में माइसीलियम इंट्रासेलुलरली भी डेवलप करता है. एंड this intercellular mycelium develop branched हेस्टोरिया. जैसा कि मैंने आपको और भी पैरासिटिक स्पेसीज के केस में बताया है कि उसमें मोस्टली हेस्टोरिया का डेवलपमेंट होता है फॉर द नरिशमेंट. वो न्यूट्रिशन लेने के लिए नॉर्मली हेस्टोरिया का डेवलपमेंट करते हैं. सो माइसीलियम इज branch intercellular and septate, but in some species mycelium is also इंट्रासेलुलर एज वेल. इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर में क्या डिफरेंस है? इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल्स के बीच भी में एंड इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के इनसाइड. सो जस्ट आफ्टर इन्फेक्शन. अब इस ये जो पैथोजन है ये किसी होस्ट को कैसे इन्फेक्ट करता है? बाय ये नॉर्मली किसी होस्ट में उसके स्टोमेटा के थ्रू अपर एपिडर्मिस के थ्रू ये एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हाइफली एग्रीगेट टू फॉर्म अ ब्लैक और ब्राउन ग्लोबुलर मास कॉल्ड द स्ट्रोमा. इन्फेक्शन के जस्ट बाद ये क्या करते हैं? वहां पे स्ट्रोमा का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रोमा. फंगस एंटर करके यहाँ पे ब्लैक या ब्राउनिश यहाँ पे कलर कुछ दूसरा दिख रहा है, बट ये जो स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली दे आर आइदर ब्लैक और ब्राउन इन कलर. एंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्ट्रोमा
देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ द कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो सर्कोस्पोरा है इसका रिप्रोडक्शन मेनली कोनिडिया के थ्रू होता है, एंड दिस कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड एक्रोजीनियसली ऑन द सरफेस ऑफ कोनिडियोफोर। द कोनिडिया डेवलप्स एक्रोजीनियसली। एक्रोजीनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोनिडिया कोनिडियोफोर के टॉप पे डेवलप करता है, एंड सिंगली एक बार कोनिडिया का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद फिर वहां पे कोनिडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब वो कोनिडिया वहां से शेड होगी तो वो वहां पे स्कार छोड़ देती है। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, द कोनिडिया लीव्स अ स्कार हियर, एंड the structure of conidiophore is a geniculate kind। geniculate structure का मतलब क्या होता है? It has a knee like bend। आप यहाँ देख रहे हो knee like bend है यहाँ पे, क्योंकि जो कोनिडियोफोर होता है इसका इस पे कोनिडिया का डेवलपमेंट एक्रोजिनस है, और वो एक्रोजिनस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोनिडिया एक कोनिडियोफोर के टॉप पे ग्रो करे और सिंगल देयर इज ओनली सिंगल डेवलपमेंट ऑफ द कोनिडिया, and after the development of that conidia the formation of conidiophore occurs again। फिर से उसका रीग्रोथ होता है conidiophore का, as you can see, and the development of the conidiophore is a subapical। subapical means apex के अलावा अब यहाँ पे लेटरल ग्रोथ आप देख रहे होगे। पहले यहाँ पे कोनिडियोफोर के ऊपर यहाँ कोनिडिया का डेवलपमेंट हुआ, अब यहाँ पे इसकी सब एपिकल कोनिडियोफोर की ग्रोथ हो रही है, और फिर इसके टॉप पे नया कोनिडिया बन रहा है। अब जब ये कोनिडिया यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे फिर स्कार होगा, और दिस कोनिडियोफोर शोज द नी लाइगमेंट्स, एंड कोनिडियोफोर इज मेनली ब्राउनिश और ब्लैकिश इन कलर, and it is sometimes septate, sometimes non-septate, sometimes it is a straight, sometimes it is a flexual, and has a distinct geniculate band। So what about reproduction in the Cercospora? The Cercospora reproduction takes place by means of conidia, which is formed on the which is formed on the conidiophore, and the conidiophore is a branched or unbranched, septate, aseptate, and it has a geniculate bands। and what about the structure of conidium? conidium का structure कैसा होता है? conidium cylindrical होता है, और ये सेप्टेट होता है, एंड ऑबक्लेवेट। ऑबक्लेवेट का मतलब इसका एक पोस्टीरियर जो सरफेस है दैट इज अ ब्रॉड, एंड एंटीरियर सरफेस इज लिटिल नैरो। ऐसे स्ट्रक्चर को ऑबक्लेवेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिडिया। नाउ द जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया का जर्मिनेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ जर्म ट्यूब अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ अबाउट 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड द कोनिडियम जर्मिनेट बाय मींस ऑफ germ tube, and each germ tube germinates into a new mycelium। तो ये कोनिडिया क्या करता है? कोनिडिया पहले जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, और ये फिर जर्म ट्यूब नए होस्ट को इन्फेक्ट करेगा थ्रू स्टोमेटा, थ्रू एपिडर्मिस, एंड होस्ट के अंदर एंट्री करने के बाद थ्रू स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस द पैथोजन मेक्स अ स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा इज अ mass of hyphae which is brownish or blackish in color, and on that stroma there occur formation of fruiting bodies known as acervuli, which makes conidiophore, and on that conidiophore there occurs formation of conidia। and what is the shape of conidia? Conidia is a obclavate and cylindrical in shape, and what is the shape of conidiophore? Conidiophore is a septate, and it has geniculate band. Sometimes it is unseptate as well as, and it is brownish or blackish in color। so I think you must be clear about the its conidia and its conidiophore and its mode of infection, how it infects। Now the disease caused by Cercospora. Cercospora, as I have told you, it infects several crops like groundnut, banana, tobacco, lady's finger, cousin's cousin, and it mostly produces leaf spot disease. And on the basis of type of spot produced, different kind of name has been given to disease। and there is a very well-known disease known as a leaf spot or Tikka disease of groundnut, which is caused by Cercospora erecticula or Cercospora personata. There is a disease Toga leaf spot disease of banana, which is caused by Cercospora musei. Frog eye leaf spot of tobacco, Cercospora nicotianae.
Leaf spot disease of lady's finger is caused by Cercospora hibiscus. Besides that, there are many more diseases, many more species of the Cercospora which are pathogenic on the plant species. Now, I am going to describe about the leaf spot or Tikka disease of groundnut. So groundnut is a scientific name of groundnut is a Heracus hypogaea, you must be knowing, and the symptoms that it produces is called leaf spot or Tikka disease. So this disease is caused by mainly two pathogens, Cercospora erythricola and Cercospora personata. They are now named as a Cercospora erythricola hori and Cercosporidium personatum detan. And what is the difference? Normally the symptoms produced by these two species are little different, which I will describe you. So what are the symptoms, what are the difference in the symptoms caused by these two pathogen? The symptoms produced by Cercospora personata is called as late leaf spot, and yes, and the symptoms produced by Cercospora erythricola is called early leaf spot. So what is the difference? In the late leaf spot, which is called by Cercospora personata, the leaf spots are small in size, they are circular in outline, and the necrotic lesions appear on both surfaces, and they are dark brown to black in color, and their young spots are not surrounded by bright yellow halo, and they develop only in the around the mature leaves. I will describe it further in the diagram as well. So the disease caused by Cercospora erythricola, which is called early leaf spot disease, the leaf spots are comparatively larger in size, and they are confluent, and necrotic lesions appear on the both surfaces, and in this yellow halo area developed around each spot. So क्या difference है? जो late leaf spot होते हैं उनके जो leaf spot होते हैं वो छोटे और circular होते हैं, और एरेकिडिकोला के उतने circular नहीं, उतनी smooth outline होती है, वो irregular outline होता है और वो थोड़े बड़े होते हैं। और उसमें सबसे जो एक डिफरेंस करने का जो एक मेजर उनका डिफरेंस है वो ये है कि अर्ली लीफ स्पॉट में हर स्पॉट जो है हर नेक्रोटिक लीजन जो है वो येलो हेलो से सराउंड होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस ब्राउन नेक्रोटिक लीजन इज सराउंडेड बाय येलो हेलो, बट इन दिस it is not surrounded by yellow halo. So this is one of the most distinguishing feature of the early and late leaf spot. इसे किसी साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, आई थिंक इस बेसिस पे दिया होगा कि ये जो अर्ली लीफ स्पॉट है इसमें ये हेलो एरिया स्टार्टिंग से डेवलप होती है और इसमें केवल बाद में मेच्योर के डेवलप होती है. आई थिंक दिस इज द basis of the difference between the early and late leaf spot, and both of this pathogen causes severe damage to crop, but late leaf spot caused by Cercosporidium personatum is most destructive. It results in yield loss of about 20 to 80%. दोनों ही पैथोजन डिस्ट्रक्टिव हैं, बट इसमें लेट लीफ स्पॉट में क्या होता है, बहुत जल्दी डिफोलिएशन हो जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, जो कि फ्रूट फॉर्मेशन को ये बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा yield loss होता है. बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल मेजर्स यूज बाय डिफरेंट फार्मर्स और डिफरेंट द डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, और इन डिफरेंट एरियाज कहाँ पे कैसी कल्टीवेशन प्रैक्टिस यूज हो रही है उस पर डिपेंड करता है. जहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यूज होती हैं वहाँ पे उतना लॉस नहीं होता, उनके पास अच्छे ट्रीटमेंट, उनके पास अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिस है, वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ उतना इन्फेक्शन नहीं होता है. बट जहाँ पे कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है वहाँ पे ये ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं. सो व्हाट इज द डिजीज साइकिल? ये डिजीज की साइकिल क्या है? एज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर केसेस ऑफ फंगस, हियर ऑल्सो देयर इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइकिल ऑफ द डिजीज. प्राइमरी साइकिल क्या होती है कि जब पहली बार पौधे को इन्फेक्शन होता है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन का जो सोर्स है दैट इज अ कोनिडिया which penetrates in the soil on the plant debris on the cells and seeds. मीन्स जो खरपतवार में, जो पौधे में जो कोनिडिया पड़ा होता है सॉइल में, दैट इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन. अब ये कोनिडिया
पौधे को इन्फेक्ट करेगा। जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलती है लो टेम्परेचर की 24 से 28 डिग्री की मिलेगी, ये कोनिडियम जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब के थ्रू इन्फेक्ट करेगा पौधे को, ये इंटर कर लेगा उसके स्टोमेटा और अपर एपिडर्मिस के थ्रू, माइसीलियम बनाएगा, वहाँ पे स्ट्रोमा बनाएगा और फिर वहाँ फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा और फिर ये इसकी एक प्राइमरी साइकिल इन्फेक्शन की कंप्लीट हो जाएगी। अब उस फ्रूटिंग बॉडी पे जो दूसरा कोनिडिया बनेगा, अब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। वो विंड से, रेन स्प्लैशेस से दूर दूर के और पौधों में पहुंच के पूरे इंटायर क्रॉप के, पूरी एरिया की क्रॉप को ये इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये विंड से भी इनका प्रोपगेशन हो जाता है, ये उड़ के भी इन्फेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई द डिजीज बिकम्स वेरी dangerous and severe in the due course of the time. So what is the primary source of infection? Primary source of the infection is the Conidia perinating in the plant debris, इसीलिए इसे soil borne fungus pathogen भी बोलते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो स्पोर है कोनिडिया, वो सॉइल में पड़ा होता है और जैसे ही पौधा ग्रो करता है, ये उसे इनफेवरेबल कंडीशन उसे मिलती है, वो इन्फेक्ट करना, इसीलिए इसे डॉर्मेंट फेज, डॉर्मेंट फेज मीन्स इनएक्टिव फेज, वो पड़ा है सॉइल में, जैसे ही उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और इट विल स्टार्ट developing its protein body, and after that secondary cycle will go on. So what are the favorable conditions for the disease? As I have told you, prolonged low temperature is very favorable. Low temperature, waterlogging condition, these are the favorable condition for almost all viruses. सभी viruses normally ये low temperature पे, waterlogged condition पे normally वो grow करते हैं. And in the case of Cercospora, it has been reported that nitrogen and phosphatic fertilizer increases the disease incidence, whereas potash decreases it. So what are the control measures of the Tikka disease? There are different kind of control measures for the primary as well as secondary infection. Primary infection के कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा है क्रॉप रोटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक ही क्रॉप को बार बार लगाने से किसी डिजीज के बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पोर्स हैं वो सॉइल में पड़े होते हैं, उनके पेरिनेटिंग कंडीशन में वो पेरिनेट कर जाते हैं और जैसे ही क्रॉप फिर मिलता है वो फिर से इन्फेक्ट करते हैं, तो उनका जो ये साइकिल है वो बना रहता है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, कोई दूसरी क्रॉप लाएं, तो वो उनका जो साइकिल है वो इंटरप्ट होगा। सो बाय दिस वी कैन कंट्रोल। एंड सेकेंड स्ट्रेटजी इज सीड प्री ट्रीटमेंट। अगर हम सीड को किसी डिसइंफेक्टेंट से ट्रीट कर दें, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट, तो इसे रोका जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिस्पोजल ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट डेब्रीज बाय बर्निंग और बुरियल, या तो उसे हम जो इन्फेक्टेड होस्ट डेब्रीज या तो उसे हम जला दें या जमीन में उसे डाल दें, जमीन के अंदर। तो इस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं पौधे को। और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक सबसे जो सक्सेसफुल मेथड है वो दैट इज फंजीसाइड स्प्रे, कि हम किसी फंजीसाइडल सोल्यूशन, फंजीसाइड का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस और द सब्सटेंस और केमिकल विच किल्स द फंगस, दैट इज अ फंजीसाइड। दो ऐसे किसी केमिकल से ट्रीटमेंट लाइक बॉडी एक्स मिक्सचर या कॉपर डस्ट प्लस सल्फर 1:1 रेशियो इज फाउंड वेरी सक्सेसफुल फॉर द कंट्रोल। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें फंजीसाइड ट्रीटमेंट करना होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीज इज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। हम चाहे रेजिस्टेंट वेराइटी का डेवलपमेंट करें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा डिजीज को रोकने का। So I have described about the fungus Cercospora, its structure, about its mycelium, about its fruiting body, about its method of reproduction, its spore, and how the disease propagates, or about its primary and secondary infection, what are its control measures, and what are the favorable condition for the disease. For any confusion, for any query, you can contact me on my channel. Thank you so much.